Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel, Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this lecture, we will once again continue to discuss the process of digestion that is occurring within the human beings, and specifically, we will highlight the two components of the small intestine, how digestion occurs within them, the jejunum and the ileum. By the end of this lecture, you should be able to know what is the role of jejunum as part of the small intestine in digestion, what is the structural and functional relevance of ileum, how digestion occurs within this part, and how the food is absorbed. We will describe in detail how food absorption occurs within the ileum. What jejunum actually is, this is part of the small intestine that is connecting the duodenum with the ileum. So this is the second part of the jejunum in which the digestion of the undigested food is going to occur. That undigested food that has reached the jejunum from the duodenum. इसके बारे में हमने already पढ़ा था कि किस तरह से different enzymes जो हैं they act upon the food, and if there is still any undigested food that has passed from duodenum into the jejunum, so its digestion is going to occur within the jejunum with probably the same types of enzymes that we have covered already. Once again, we have a diagram over here just to highlight the different components of the small intestine. As we have already discussed, this is the portion of the stomach with the pyloric sphincter over here, जिससे आगे हमारे पास there is the jejunum that is around about 2/5 of the whole length of the small intestine. Okay, so this is the portion that is known as jejunum. से आगे हमारे पास जो this is the duodenum that we have talked about. ठीक है, that is the 2/5 of the length. इसके बाद ये portion है, this is the jejunum, slightly longer than the duodenum, where the digestion of the undigested food is going to occur. And then later on this portion, the longest portion of the small intestine, it is the ileum. Now we will just summarize the different enzymes that are secreted within the small intestine, specifically in the duodenum and jejunum, that help in the digestion of this food. So we start off with the trypsin, that is secreted in form of trypsinogen. It is activated, and what is its function? It is going to break down the protein into amino acids. Then we have other enzymes as well, such as peptidases, जिनका के क्या मकसद होता है, that they break down the polypeptide chain present between the amino acid. इसके अलावा एक enzyme होता है erepsin, that is there to break down the bond that is present between the dipeptide protein. ठीक है, that is known as the erepsin that we will mention over here. ERY, erepsin, SPSIN. ठीक है, तो पेप्टाइडेज जो है, इट विल ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, दैट हैज़ मल्टीपल अमाइनो एसिड्स. दो अमाइनो एसिड्स के ब्रेकेज के दरमियान बॉन्ड के ब्रेकेज के लिए देयर इज एरिप्सिन. देन वी हैव लैक्टेज ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन लैक्टोज, दैट इज अ डायसैकेराइड. ठीक है, means two monosaccharides are going to join together to form a lactose. ठीक है, that is broken down by the lactase, that is a carbohydrate obviously. Then we have lipase that are there for the breakdown of lipids into what? The fatty acids and cholesterol. Finally, we have another molecule of carbohydrate known as the maltase, another disaccharide that is broken down into glucose molecule, ठीक है, by the activity of maltase enzyme. ठीक है, so maltose is the disaccharide that is broken down into two molecules of glucose.
यहाँ पे जो लैक्टोज है दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, द डबल G, ठीक है, ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज ओवर हियर, गैलेक्टोज, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दे आर secreted एंड what टाइप ऑफ biomolecules they are going to digest within the environment of the small intestine. The next portion which the digested food is going to enter is the ileum. So what important is about the ileum, that this is where the absorption of the food actually takes place. यानी कि जो भी ब्रेक डाउन हुआ है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फूड के, चाहे वो प्रोटीन्स हुए इनटू अमाइनो एसिड्स या फिर फैटी एसिड्स हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड सॉरी द फैट्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, नाउ दे गेट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सरफेस इनटू द underlying blood capillaries, and this is how energy is transferred from the food. First those are molecules are broken down and then energy is absorbed into the blood vessels, and this is how energy basically reaches into the blood and then to the different parts of our body. How this occurs, for first of all we need to understand the structure of the ileum that has multiple inner folding present within it. Mind you, this is the largest part of the or the longest part of the small intestine. So it has inner foldings on its surface known as the villi, ठीक है, that consist of blood vessels as well. Microscopically अगर हम further villi को study करें तो multiple further finger like small projections हमें नज़र आती हैं जिनको कि हम microvilli कहते हैं. इनका मकसद क्या होता है, ऑब्वियसली विलाई जो हैं इस या किसी भी सरफेस के ऊपर जितनी ज़्यादा फोल्ड्स हों उतना ही ज़्यादा उसकी जो एक्टिविटी है उसका सरफेस एरिया एनहांस हो जाता है. यानी कि जितनी ज़्यादा इलियम के ऊपर जो है वो विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन होगी. सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इलियम इज़. We will go through the diagram as well, that how these villi and microvilli are present, how they are covered with the epithelium, and where are the different blood vessels and the lymphatic system located under these villi. Now in order to understand the structure of the microvilli and the villi specifically, we have an image over here of the small intestine once again. So this is the portion that we call the jejunum. उसके बाद the longest portion of the small intestine, that is the ileum. इसको अब हम देखेंगे कि microscopically how we can see the villi, ठीक है. So the inner surface of this ileum, it is like this, ठीक है. इस तरह से finger like projections होती हैं known as the villi, ठीक है. अब ये जो villi का स्ट्रक्चर है that has an epithelial covering over it, ठीक है. इस तरह से tall columnar type cells और epithelial cells कह सकते हैं इसके ऊपर present होते हैं throughout its surface, ठीक है. यहाँ पे आपके पास इस तरह से इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है. तो ये पूरे का पूरी जो सीक्वेंस है इट इज़ फॉलोड ऑन ओवरऑल सरफेस ऑफ दिस villi, ठीक है. दैट इज़ द इंटरनल पोर्शन ऑफ द इलियम दैट यू कॉल, ठीक है. इसी तरह से एपिथेलियम इधर है, ठीक है. तो अब इन एपिथेलियल सेल्स को अगर मैग्नीफाई करके देखा जाए, सो दिस इज़ हाउ देयर स्ट्रक्चर एक्चुअली इज़, ठीक है. एपिथेलियल सेल का जो सरफेस होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी इस तरह से स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, फिर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको कि हम माइक्रोविलाई कहते हैं. एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल सेल स्ट्रक्चर एक्चुअली लुक्स लाइक. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट समवेयर इन दिस रीजन अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनेल्स एज वेल, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम एज इट इज़, ठीक है. तो ये जो एपिथेलियम का सरफेस वाला पोर्शन है इसके ऊपर इस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं. इनर टू दीज
villi, there is presence of the blood vessels, ठीक है, in this section, ठीक है। इस तरह से स्मॉल कैपिलरीज जिसको कि हम कोशिश करते हैं रेड कलर में शो करने की, ठीक है। कैपिलरीज आर बेसिकली कवरिंग दिस होल पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन से इनिशिएट होके देयर आर मल्टीपल कैपिलरीज ओवर हेयर, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लड वेसल्स आ जाती हैं जो हमारे पास वेन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह से एसोसिएटेड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो जब भी फूड डाइजेशन हो जाती है, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो फिर वो इस सरफेस से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन दे मूव इनटू द ब्लड वेसल्स, जो कि अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, दे मूव इनटू दिस स्पेस। दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन or active transport, it is known as the absorption of the food in the ileum. Now how the process of absorption actually goes on? So we have carbohydrates broken down into simple sugar, proteins broken down into the amino acids. Both these simpler components, they diffuse into the blood vessels, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइदर डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिनकी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ वंस दिस सॉर्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन हैज occurred, there are chances that the fatty acid and glycerol that were broken down or they were absorbed into the capillaries, they might reunite in one of the portion of the स्मॉल इंटेस्टाइन दैट आर नोन एज द लैक्टेल्स। तो ये अब लैक्टेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा। सो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द विल्लाई एंड द माइक्रोविल्लाई, सॉरी। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से ब्लड वेसल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट, जिनमें एब्जॉर्प्शन होती है ब्रोकन डाउन फूड पार्टिकल्स की, ठीक है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल हैं, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो इस तरह से सारी की सारी कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे फूड ने एब्जॉर्ब करके जाना है, ठीक है। इन एसोसिएशन विद दिस ब्लड वेसल देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनदर सिस्टम दैट इज नोन एज द लिम्फेटिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन that the fatty acid and glycerol that were absorbed through these blood vessels, now they may become the part of the lymphatic system, ठीक है। This portion is also known as the lacteals. lacteals में क्या होगा, दोबारा से जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन करके फैट मॉलिक्यूल बनाएंगे और दोबारा से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की भी फॉर्मेशन होगी, तो these two large macromolecules they can combine to form the lipoproteins that can enter into the blood plasma, further hydrolyzed, and then it can become the part of the liver in form of stored fat, and also it might be found in association with the muscles of your body right under the skin to provide insulation. So this is the end of our lecture where we have intensively discussed the absorption of food in the small intestine. Do like our video, share it with other students as well. Comment section mein do mention if you have any question relevant to the topics we have covered over here. Do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive new video notifications on a regular basis. Thank you very much.